Hello everyone, welcome to our Premier League Saturday night roundup. जी हाँ, 5 games, some beautiful plays, beautiful goals, and big stories. So let's go one by one, match by match. So first game that I will go with is Wolves versus Manchester City, which is a away game for Manchester City. जी हाँ, एक अवे गेम था मैनचेस्टर सिटी के लिए, and Manchester City जी हाँ made a powerful start of the season. Haaland opens the score sheet for Manchester City in the 34th minute with Tejani. जी हाँ, Tejani dribbles past some players and pass it to Luis. Luis cross into the box and none other than Haaland Hawan. जी हाँ, उसने जो है वो बरी किया वो चांस एंड मैनचेस्टर सिटी को 1-0 की लीड दी इन द 34th मिनट. जी हाँ, so after a few minutes City scores again and doubles up his lead. जी हाँ, डेब्यूटेंट तेजनी मिडफील्डर लेफ्ट फ्लैंक से एक बेहतरीन शॉट लेते हैं एंड सिटी की लीड को 2-0 कर देते हैं एंड सिटी जो है सेकंड हाफ 2-0 के साथ जाती है, विच इज़ वेरी डिजर्विंग लीड इन फर्स्ट हाफ फॉर मैनचेस्टर सिटी. एंड व्हेन सेकंड हाफ स्टार्ट्स, सेम स्टोरीज फॉर मैनचेस्टर सिटी. जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी स्टार्ट्स bowling again in the second half like they do in first half. In 61st minute, Haaland scores his second and Manchester City's third goal of the match, and the game is now almost over for Wolves. Yes, I know कि गेम जो है मैनचेस्टर सिटी का ही है इसके बाद, बट स्टिल match is not yet over. After coming from bench, Turkey makes it 4-0 for Manchester City in favor of Manchester City in his debut game of the season. So Premier League में Turkey का first game and he scores from bench in favor of Manchester City. It was overall a very calm, powerful and ruthless performance from Manchester City, who clinically plays their game throughout the game and controlled the most chunk of the game, which is मतलब a usual business for मैनचेस्टर सिटी. अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर सिटी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि गेम को कंट्रोल करना, अपने पेस से चलाना और एक क्लिनिकल गेम निकाल के रखना, अलग कर देना. मैच डे मैच वो यही करती हैं. वो रेयर होता है जब वो फ्लॉप हो एज अ टीम. सो अंडर पैप तो ये हम एज अ अटैकिंग टीम से हम ये तवक्कु रखेंगे ही रखेंगे कि वो ऐसा गेम एक शो करे अपने फैंस को. सो अगर हम सेकंड गेम की बात करें तो सेकंड गेम टॉटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस बर्नली. तो एक बात और मैं क्लियर कर दूं, मैं ये कोई जो गेम्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं लिया है. मैंने इस ऑर्डर में लिया है कि जो गेम मुझे एक्साइट किए दिस सैटरडे जो जो गेम मुझे ज़्यादा एक्साइट किए उनकी बात मैं पहले कर रहा हूँ. जो लेस एक्साइटेड थे उनकी ऑब्वियसली मैं बाद में बात करूँगा. तो अगर मैं सेकंड मैच की बात करूँ तो वो है टॉटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस बर्नली. In North London, Tottenham Hotspurs made sharp and direct play. जी हाँ, Tottenham Hotspurs were sharp and direct. Richardson struck early on in the 10th minute and then again on 60th minute make it 2-0 in favor of Spurs. एंड स्पर्स की बात करें तो स्पर्स पूरे गेम में कहीं भी अनकंफर्टेबल नजर नहीं है. थ्रू आउट द गेम इज लुकिंग अंडर देयर कंट्रोल एंड आफ्टर स्कोरिंग सेकंड गोल goal in 66th minute, Brandon Johnson's make it 3-0 for in favor of Spurs. So all in all, Spurs keep the tempo high throughout the game. A very positive start of the season for Spurs. Their forwards connected very well with each other and looking lively throughout the game. So good news for the Spurs. At least स्टार्ट तो बड़ा बैंक ओन किया है. मैंने तो बहुत अच्छा प्रोडिक्ट किया है स्पोर्ट्स के लिए पहले ही
इन माई प्रोडिक्शन वीडियो मैंने तो कहा ही है कि ये एक ऐसी टीम है जो कि टॉप 4 के लिए भी हमें compete करती नज़र आ सकती है। सो अगर मैं तीसरे गेम की बात करूँ, सनडरलैंड वर्सेस वेस्ट हैम, जी हाँ सनडरलैंड who is newly promoted team this season. जी हाँ, newly promoted. Sunderland delivers a powerful punch in the first game. जी हाँ, एक पावरफुल कॉन्फिडेंट विन के साथ सनडरलैंड स्टार्ट किया है अपना प्रीमियर लीग सीजन आफ्टर अ पेशेंट फर्स्ट आवर माइंदा ब्रेक द डेडलॉक फॉर सनडरलैंड। जी हाँ, on 61st minute Dan Ballard double the lead for Sunderland and makes it 2-0 in favor of Sunderland. After second goal, few minutes later, Wilson scores again in the stoppage time for Sunderland and wrapped up the game for Sunderland against Burnley. So बहुत कुछ मिला है सनडरलैंड को। एक तो कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा एक अच्छा स्टार्ट करने का, क्योंकि एक जिटर होते हैं स्टमक में कि मतलब न्यूली प्रमोटेड टीम है कैसा करेगी, इतना हाई प्रोफाइल लीग में, टॉप टायर लीग में कैसा करेंगी ये। बट एक अच्छी कॉन्फिडेंट स्टार्ट, एक अच्छा कॉन्फिडेंट बूस्ट मिलेगा सनडरलैंड को इस सीजन में आगे इस विन से। तो अगर हम ऑल एंड ऑल गेम को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ खेला सनडरलैंड ने, सॉलिड प्रेसिंग दिखाई एंड बोनस क्लीन शीट लेके जाएगी यहाँ से, जो कि लॉन्ग रन हमें नहीं पता कब ये क्लीन शीट उन्हीं के ही फेवर में काम करे आगे जाके। सो एन आइडियल रिटर्न टू द टॉप फ्लाइट फॉर नन अदर देन सनडरलैंड। सो अगर मैं फोर्थ गेम को देखूं आज के दिन के सैटरडे की, जो कि था ब्राइटन वर्सेस फुलहाम, so both teams apparently shared the points. जी हाँ, Matt O'Reilly put Brighton up front with a goal from the sport on 55th minute, but Rodrigo Muniz had different plans. जी हाँ, Muniz grabbed late equalizer for Fulham in the 96th minute, and Brighton unfortunately have to settle with 1 पॉइंट ईच, जो कि नज़र आ रहा था कि ब्राइटन एक गेम में से 3 पॉइंट लेके जा सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉपेज टाइम में फुलहाम का एक गोल आके गेम को 1-1 फिनिश कर देता है। ब्राइटन although controls the game very well throughout the game, but Fulham at the end sees his movement and makes the scoreline 1-1. So this game ends 1-1। एंड अगर हम नेक्स्ट गेम की बात करें, फिफ्थ गेम ऑफ द डे, जो कि था एस्टन विला वर्सेस न्यू कासल यूनाइटेड। फॉर मी इट इज़ वन ऑफ द बोरिंग गेम। एक अर्ली स्टार्ट थी आज की, बट पर्सनली आई डोंट इंजॉय द गेम मच। सो ये गेम जो है विला पार्क में खेला गया एस्टन विला के होम ग्राउंड में, एंड मैच फिनिशेस goalless draw। जी हाँ, द की मोमेंट ऑफ द मैच इज द रेड कार्ड which Ezri Konza receives in the 66th minute of the game. Even with 10 men, even with the 10 mans, Villa shows resistance in defense, calmly, composedly defense show किया Aston Villa ने, and Newcastle although created some of beautiful chances in the game but could not find the net. So in the end, hard earned point for the hosts and कह सकते हैं कि एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द visitors. So this is it for the Saturday games from the Premier League. So if you enjoy the review, then please like and share the contact नहीं शेयर नहीं करना भाई, कॉन्टैक्ट मैं किसी से नंबर नहीं मांग रहा हूँ, बिना दिल की बातें बाहर आ रही, बट प्लीज शेयर द content and I will see you later in Sunday again with a review of Sunday Roundup. So until take care.